now live in UNRWA schools and shelter. I was in Gaza last week, my first time since the war started. What I saw will mark me forever. Every little girl and boy I met in an UNRWA shelter asked me for bread and water. Children used to learn and laugh in the school I visited. Now the school is an overcrowded shelter that lacks the minimum standard for a dignified life. The continuous bombardment together with the siege are choking Gaza and its people. Basic services are crumbling, everything is running out, food, water, medicine and fuel. And the dramatic development in Al-Shifa last night pushed many health staff and wounded people to leave. Excellencies, I have 13,000 colleagues in Gaza. Most are displaced. Many continue to work. They operate 150 UNRWA shelters. They keep 1/3 of our health center open and manage mobile clinic. They deliver medicine to hospital. They deliver flour to bakeries and bring bread back to the shelter. My colleague Maha calls her job a mission impossible, especially when she tries to reassure her children every morning that they will not die. Excellency, today Gazans feel dehumanized and abandoned. They are yearning for reassurance, especially from their Arab and Muslim brothers and sisters, that they hear the crying of the children. This half-hourly clock is brought to you by कोई harsh smell नहीं देती, Golden Pearl Hair Off and Innovex Solar Energy, दिल की फिक्र से बेफिक्र. Palestinian. I also firmly stated our position against the forced displacement of the people of Gaza, most of whom are descendants of Palestinian refugees. I cautioned against the spillover of the conflict into the region. The West Bank has reached a boiling point with the Israeli forces and settler violence claiming lives daily. The Lebanon-Israel border is simmering with tension. Excellencies, the Palestinians in Gaza have always relied on the Arab and Muslim world for solidarity. Today, they also need you to turn this solidarity into further and stronger action. I am seeking your support for three specific and urgent matters. First, to reach a humanitarian ceasefire with strict adherence to international humanitarian law. We must insist on protecting civilian and civilian infrastructure, including United Nations facilities and hospitals. This should be our recurrent request. I'm sure that many of you can influence action on the ground. No effort should be spared at this point. Second, a meaningful and continuous flow of humanitarian aid is essential. We must make the flow of supply match the immense humanitarian needs. But the logistic and the verification of trucks by Israel are extremely cumbersome. They only allow a limited number of trucks into Gaza. We must increase the volume of aid and use other crossings, including those within Israel, like Kerem Abu Salem. Third, UNRWA urgently needs funds and new voice. UNRWA is not only the largest UN agency in Gaza, but also the last remaining lifeline for 2.2 million people. We can offer much more if we have the means. I sincerely thank the countries that have already announced contribution for the generous response, and I respectfully call on other members of the League and the OIC to also show your solidarity by supporting UNRWA. I want to tell the people in our shelter that the Arab and Islamic world tasked us to help them and gave us the resource to do so. Finally, I need you to firmly defend the agency against false and insidious claims that its schools teach hatred or that it has let the civilians of Gaza down. This accusation comes from those who want us to fail. They fuel a toxic and deeply polarized environment. To conclude, we must also consider the day after a political solution has become a matter of life and death for millions of people. A genuine prospect of Palestinian statehood is critical. We must step back from the brink before it is too late. I urge you
member of the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation, to act now to change the trajectory of this crisis. With your support, UNRWA is ready to do its part. Thank you. أشكر معالي السيد فيليب على كلمته، والآن نبدأ جلسة المناقشات. أدعو فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. Mohammed bin Salman, the Crown Prince and Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, Your Majesties, Royal Highnesses, Your Excellencies, Heads of State and Heads of Delegation, may God's peace and blessings be with you. They believe that their military might will protect them and intimidate us, yet we are the rightful owners of the land, Jerusalem, and holy sites that will remain us united, and the occupation will come to an end. As I speak to you, our Palestinian people have been reeling to the most heinous, ferocious aggression. It is not but a genocide war by the Israeli killing machine that has been violating the international law, the international humanitarian law, and breached all red lines, as they have killed and injured more than 40,000 Palestinians, most of whom are women, children, and elders, in addition to the total destructions of thousands of residential homes on the heads of their residents. This is what happened in 1 month. What if it remains and continues thereafter? At the same time, the West Bank and Jerusalem are coming under daily attacks by the Israeli occupation forces, as well as the terrorist illegal settlers. My heart is heavy with sadness and grief for the killing of thousands of children and annihilation of total households, destruction of hospitals, mosques, churches, and schools in Gaza Strip. It defies logic that this is happening before the eyes of the whole world without immediate action, without putting an immediate end to this war and sparing our unarmed civilian people from these atrocities. How long will these violations, atrocities, absence of justice continue against our people? I am certain that you cannot accept, nor you, nor any free man in the world would accept these dual standards, or accept that our people will remain victims to this ethnic cleansing, genocidal war. The Israeli occupation forces and those who support and protect them are totally responsible for the killing and the injury of each and every Palestinian woman and child. The occupiers will be brought to justice before the international criminal courts, even if we have to go to the corner of the world. And in this context, we would like to point out that the United States, that have the major impact or influence on Israel, is totally responsible for the absence of a diplomatic solution. And we call on the U.S. administration to put an end to the Israeli aggression, the Israeli occupation and violation and desecration of our holy sites. Yes, we call on the United States administration. Mr. President, this is a historical moment. Each and one, all and each, must live up to his responsibility
for the restoration of peace and security foundations in the region to avoid recurrence of violence. And in order to achieve this, we emphasize the following. First, the Security Council to live up to its responsibility and obligation to put an end to this belligerent war on against our people without further delay, and the delivery of relief aid, medical supply, restoration of fuel, electric power to Gaza Strip, and prevention of forcible transfer of our Gazans, our fellow Palestinians in Gaza and West Bank, which is totally and categorically rejected. Second, no military or security solutions are acceptable, as they have all failed, and the Israeli occupation forces undermine the two-state solution with their illegal settlement policies, genocide, aggression, and above all, the unjust siege laid around Gaza and the violation of the historic and legal status of the Christian and Muslim holy sites. We will hold steadfast, holding our ground on our own homeland, and we cannot bargain over our established rights. We reiterate that Gaza Strip is part and parcel of the state of Palestine, and the diplomatic solution must be inclusive of all the Palestinian territories, including Gaza, Jerusalem, and West Bank. And we reject Israel's piracy over our funds transferred to Gaza Strip on a monthly basis, whom we did not abandon for a single day. The total budget expended in Gaza Strip since 2007 exceeded $20 billion. It is our duty, it is our obligation towards our fellow Palestinians to ensure they are provided with health, education, power, water, and other basic services, in addition to the salaries of employees, let alone the social welfare. We call on the Security Council that Palestine is granted its permanent membership and the international protection to the Palestinian people provided. And this is what we have repeatedly demanded. Yet we are abandoned and left alone to face the Israeli occupation forces with their aggression and belligerent war. We need and we seek international protection for our unarmed civilian Palestinian people on the basis of the Arab Peace Initiative to put an end to the occupation and have the Palestinian independent state on the 1967 border established, and the Palestinian refugee issue be resolved under the United Nations resolutions with a clear mechanism of implementation. This is what are working on and complied by the Palestinian Authority, the sole and lawful representative of the Palestinian people. I call on rallying the international support to enable the Palestinian state institutions to continue to fulfill their duties to support our Palestinians in Gaza Strip, including the rebuilding of Gaza Strip, and to have your resolutions with regards to support our budget implemented in order to provide the monetary safety network endorsed in the previous summit, mainly at this dire time, and also to provide resources to bring the Palestinian economy back on its feet at the earliest and without delay. We also reiterate that we will continue to implement
reform plans across our institutions, and we are willing to have general, presidential, and parliamentary elections across all the Palestinian territories, including Jerusalem. To conclude, we thank His Royal Highness, the Monarch of Saudi Arabia, King Salman bin Abdulaziz, and the Crown Prince, the President of this summit, Prince Mohammed bin Salman, their Royal Highnesses and Majesties, the rulers and the heads of state, for providing support and solidarity with our people at this grave hour. And I wouldn't fail to remember to thank all the peoples of the world who took to the streets protesting and demonstrating in support of our established lawful rights. And as we mark the anniversary of demise of late President Yasser Arafat, to our people we say, here we stay, remain steadfast, and by the grace of God we will end up victorious. Thank you, President Mahmoud Abbas, and give the floor to the monarch of Hashemite Kingdom of Jordan, King Abdullah. In the name of Allah, the Omnipotent, the Merciful, and His blessings be upon His final messenger, Muhammad. My brother, Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Your Majesties, Excellencies, ladies and gentlemen, may God's peace and blessings be with you all. I thank my brother, the Monarch of Saudi Arabia, and my brother, Prince Mohammed bin Salman, for hosting this Arab Islamic Summit. Today, we convene for Gaza and the Gazans as they are reeling under killing and destruction, under a heinous, belligerent war that must come to an end immediately. Otherwise, the entire region will be on collision course, where children of coming generations on both sides will pay the price, and the toll will be heavier on the region and the whole world. This is not 1 month old. It dates back to more than 7 decades of violence, violations, and desecrations of holy sites. Majority of victims are innocent civilians. It is the same mentality that wishes to transfer Gaza in uninhabitable land, targeting hospitals, churches, schools, killing medical teams, rescue teams, elderly women and children. And I wonder, रियाद में गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक का गैर मामूली सरबराही इजलास जारी है और पाकिस्तान की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर भी इसमें शरीक हैं। आपको बताएं कि सर्दियां आती थीं, रोज़गार लाती थी, मगर अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। कुछ दौर की जिद्दत और महंगाई की शिद्दत, लिहाफ और रज़ाई के कारीगरों के पास काम कम होने लगा है, मगर आला मायार आज भी बरकरार है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहानिया से एम असीम सरवर। रुई के ढेर को चादर पर ढेर करना, छड़ी से इस अंदाज में पीटना कि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चौखाए, और फिर सलीके से रंगीन कपड़े में समो देना। जहानिया में रुई ढूंढने वाले साला साल से काम अंजाम दे रहे हैं। फिर वक्त बदला, रजाइयों लिहाफ की जगह कंबल आ गए। मशीन से तैयार करदा रजाइयाँ भी मार्केट में आईं। रही सही कसर बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। सर्दियों के सीजन में जिनके पास सर खुजाने की फुर्सत न होती थी, आज काम की कमी है। 63 साल से हमारा ये कारोबार बहुत अच्छे वसी पैमाने पे चल रहा है, और जब से पॉलिस्टर रजाइयाँ और बल वगैरह आए हैं, लंडे की रजाइयाँ आई हैं, उस वक्त से हमारा काम काफ़ी डाउन हो गया। बिजली इतनी महंगी तरीन हो गई है, हमारा बिल 2-2.5 हज़ार का आता था, अब हमारा बिल 15,000, 16,000, 20,000 से कम नहीं आता। हम बहुत परेशान हैं महंगाई से। दौरे जदीद की आसाइश अपनी जगह, मगर जो आराम
हाथ की बनी रजाइयों में है, वो किसी मशीनी कंबल में नहीं। सरगोदा में सर्दियों की आमद के साथ मूंगफली की मांग में इजाफा हो गया। मूंगफली भुनाई के कारखाने की रौनकें बहाल हो गई हैं, जबकि सीजन आने पर भट्टा मालिकान और मजदूर निहाल नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान मौसम। जेब पर हल्की, मजे में शानदार, बच्चा हो या बड़ा मांगता है बार बार। सरगोदा में गर्मा गर्म मूंगफली की मांग बढ़ गई। पाराचनार, चकवार, गुजर खान की मूंगफली जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप है। शहरी कहते हैं कमर तोड़ महंगाई में ड्राई फ्रूट तो नहीं खा सकते, कम अज कम मूंगफली से ही सर्दी का मसा दोबाला कर लेते हैं। सर्दियों की सौगात है मूंगफली, बच्चे फरमाइश करते हैं, जैसे सर्दी शुरू होती है बच्चे कहते हैं वहाँ मूंगफली लेके आए। गरीब आदमी जो है उसके लिए ये सिर्फ मूंगफली उसके लिए है। अखरोट, बादाम, काजू जो है वो तो गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर हैं। सर्द मौसम में मूंगफली का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। मूंगफली की भुनाई करने वाले कारखानों की रौनकें लौट आईं। एक तरफ मूंगफली की बढ़ती मांग और कीमत से ताजर परेशान है, तो दूसरी तरफ मजदूर तबका रोजगार मिलने पर खुश दिखाई देता है। ये मूंगफली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरा साल हमारे कारीगर और मजदूर जो है इस चीज का इंतजार करते हैं कि सीजन आने वाला है। ये हमारा सीजन चालू हो गया है और दिन रात मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं मजदूर। हम कच्चा माल पीछे से लेके आते हैं और हमारे पास 6 मशीनें लगी हुई है मूंगफली वाली। बुनाइयों के आगे पंखे के आगे ये सफाई किया जाता है, सफाई करके यहाँ पे मार्केटों के अंदर गर्मो गर्म सेल किया जाता है। सर्दियों की सौगात मूंगफली मार्केट की जीनत बन गई। बढ़ती महंगाई के बायस सस्ता ड्राई फ्रूट भी आवाम की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सुलेमान मौसम, बोल न्यूज, सरगोदा। राजनपुर की धरती को सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम के मज़ारों की वजह से खास अहमियत हासिल है। कोहे सुलेमान के दामन पर माड़ी का मुकाम सहाबा कराम की आखिरी आराम गाह है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मजारी से। बिल्कुल, इस वक्त में राजनपुर का इलाका है। यहाँ पे जो है ना हमजा सुल्तान जो कि हज़रत अली शेर खुदा के 18वें बेटे हैं, उनके मज़ार पर मैं आया हुआ हूँ। इस वक्त मैं मज़ार पे मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी तादाद में दूर दराज से ज़ायरीन आए हुए हैं, अकीदतमंद आए हुए हैं। अकीदतमंद यहाँ आके क्या महसूस करते हैं, किस तरह की दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, हम उनसे जानते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो एक ऐसी जगह पे आए हैं जो अल्लाह के वली हैं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा के फर्जंद हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। उसके अलावा यह है कि यहाँ पे लंगर का अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का इंतज़ाम होता है। लंगर भी यहाँ पे तकसीम किया जाता है। लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ अल्लाह के नेक वली के सदक़े अल्लाह पाक से यहाँ पे लोग अपनी मुरादें अल्लाह से मांगने आते हैं। इस अल्लाह के वली का वास्ता दे दे के तो लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह पाक सुनने वाला है, मेहरबान है। जी, जैसा कि आपने इनके मुताबिक सुना है कि दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, दिल से दुआ मांगते हैं और लोगों का ये कहना है कि दिल से मांगी हुई दुआएं जल्द अज जल्द कबूल हो जाती हैं। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का हुसूल हर मोमिन मर्द व औरत पर फ़र्ज है। शकरगढ़ में हफ़ाज़े कराम के दरमियान मंजिल सुनाने और किरात के हवाले से मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर के मदरसों के तलबा ने हिस्सा लिया। शकरगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद हुसैन। में अल्लाह ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। शकरगढ़ के अक्सा इस्लामिक सेंटर में हुफ़ाज़ कराम के दरमियान मंजिल सुनाने और तिलावत के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तहसील भर से शिरकत करने वाले मदरसों के तलबा ने सीने में महफूज कुरान पाक सुनाकर असातिज़ा की खूब दाद वसूल की। बहुत से मदरसों के बच्चों ने हिस्सा लिया है और इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई है। आज यहाँ पर हमारा इम्तिहान हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान पाक की तालीम हासिल करे, इसे याद करे। इस मौके पर उलमाए कराम का कहना था कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हमारी दुनिया व आखिरत के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ साइंसी उलूम व दुनियावी उलूम हासिल करने की अहमियत और अफादियत है, वहाँ आखिरत की जिंदगी के लिए कुरान की तालीमात इंतहाई मुफीद और कारगर है। कैमरामैन राना आदिल के साथ शहजाद हुसैन, पोल न्यूज, शकरगढ़। आपको यहाँ पर एक अहम खबर दें, मेलसी में कार नहर गिरने के वाक़े में 3 नौजवानों की लाशों को निकाल लिया गया है, जबकि 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रात कार ढमकी नहर में गिरने से 5 अफराद डूब गए थे। पानी की सतह कम करने के लिए ढमकी नहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मेलसी में, जहाँ कार नहर में गिरने के वाक़े में 3 नौजवानों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि
2 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात ये हादसा पेश आया था। कार ढमकी नहर में गिरने से 5 अफराद डूब गए थे। पानी की सतह कम करने के लिए ढमकी नहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उम्र कम लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। मिलवाते हैं आपको गुजरात के होनहार मुसव्विर से, जिनकी पेंटिंग्स और स्केचेस बड़े बड़ों को हैरान कर रही हैं। ये उंगलियां कलम थामे तो शाहकार बनाती हैं। कायद आजम से लेकर मेजर राजा अजीज भट्टी तक के ये खाके मुसव्विर की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। सफीउल्लाह भी 12वीं जमात में जेर तालीम है, मगर आइंस्टाइन और क्वीन एलिजाबेथ समेत कई बड़ी शख्सियात के स्केचेस बना चुके हैं। मुझे ये काम स्केचिंग का बचपन से शौक था और तब से मैं अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर रहा हूँ। प्रोफेशनल आर्टिस्ट की मैं बनना चाहता हूँ। मेरा बचपन से शौक है और अभी तक मैंने इसको कैरी किया भी हुआ है। स्केच आर्ट में सफीउल्लाह के गैर मुल्की आइडियल अब इनके दोस्त बन गए। मशहूर शख्सियात समेत सफीना जैक और रोज के साथ जोकर को भी स्केच में ढाल दिया। एक फ्रेंड था ये मार्शल वाइट के नाम से, वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उससे मैंने मुतासिर होकर अपना ये काम स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा। बोल पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। कल कुछ मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। खुदा हाफिज़। Introducing the all-new Tug Bites. Every bite is now Hatke. Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites. Bites you Hatke. Lucky shirt? Lucky chair? Unlucky sherry? Or lace? Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de paso de la cama, paso de la cama. Oh, maintenance. Cricket or lace always. Telenor 4G Live monthly extreme Pro Max offer, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात, और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स नन्हे बच्चों में गैस, पेट दर्द दूर करने के लिए मौसर, क्योंकि विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। अब मेरे घर पर लेज ही नहीं है तो मैच कैसे देख सकते हैं? मिल गए लेस। Cricket or lace always. पेश है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। Telenor 4G Live monthly extreme Pro Max offer, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात, और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। पेश है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। The wait is finally over as I welcome you all to the Lucky shirt? Lucky chair? Unlucky sherry? Or lace? Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de quiero conmigo que nada negativo, me mantengo positivo y tengo ganas de paso de la cama, paso de la cama, paso de la cama. Maintenance. अब मैच का मजा आएगा। Pakistan has won the toss and they've elected to bat. Hi girls. I love going out.
लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिव नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, सो सॉफ्ट, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. अब मेरे घर पर लेज ही नहीं है तो मैच कैसे देख सकते हैं? मिल गए लेस। Cricket or lace always. पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी। टेलीनॉर 4G लाइव मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिससे मिले 100 GB डेटा पूरा महीना, दिन हो या रात, और तमाम नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉल्स का मोर से ज्यादा फायदा, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में महीने भर के लिए। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक, बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। ब्लीनी हेयर कलर, बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। ब्लीनी हेयर कलर, हर रंग में लगो यंग। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. गाजा की संगीन सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी मेजबानी में मुश्तरका अरब और इस्लामी सरबराही इजलास। सदर महमूद अब्बास ने कहा, फलस्तीनी इसराइल के हाथों नस्लकुशी का शिकार हैं, इसराइल को जंगी जुराइम का हिसाब देना होगा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान बोले, गाजा पर जंग को मुस्तरद करते हैं, मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इजलास में तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर समेत रुकन ममालिक के सरबराह शरीक हैं। This headline news is brought to you by Bites You हटके। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं रियाद, जहां पर इस वक्त इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास गजा की सूरत हाल पर जारी है। रजब तैयब एर्दोगान खिताब कर रहे हैं। To listen to these calls, the Arab and Muslim world is standing united in the face of this solemn incident. And I thank and appreciate all the states who managed to deliver some aid in cooperation with our brothers in Egypt. We in Turkey dispatched 10 cargo planes, and yesterday a cargo ship carrying 366 tons left Turkey and will arrive today in Al Arish port. We will spare no effort to continue to cater to cancer patients in the Turkish hospital inside Gaza Strip. On November 15, an international conference will be held whereby the spouses of the heads of state will be convened to an international conference. Our aim is to have the humanitarian aid delivered, and the prime goal is to reach a permanent ceasefire, not a temporary one.
Biz de söz konusu karara aynı şekilde yaklaşıyoruz. Ayrıca insani yardımlar kesintisiz ve sürekli olarak gerçekleştirilmeli. Humanitarian pause is not a just solution. We seek a permanent ceasefire and safe passage be opened for delivery of relief aid, mainly fuel, to be delivered to the vital institutions, chiefly hospitals. Tüm teşkilat üyesi ülkeler Mısırlı kardeşlerimize gereken desteği verir. Similarly, the UNRWA has described Gaza that is now totally denied of all types of aid like an inferno. Border crossing points should remain open permanently. At the same time, Israel and Israeli officials must be held criminally liable for their crimes. This must be addressed by the United Nations, the International Criminal Court, whereby due investigations must be initiated. Speaking of the nuclear powers, the International Agency for Atomic Energy also must address this issue. The nuclear power possessed by Israel must be detected and identified. This particular issue, vital issue, cannot go unnoticed. This represents a grave threat to the entire region. Third point is compensation. It is one of the factors that Israel is acting recklessly, is that on every occasion they escape payment of compensation for each and every crime they commit, from destruction to the killing. Israel must pay compensations. It is Israel that must pay compensation. It is like a favored, cuddled boy. We cannot abandon our fellow humans in Palestine. We cannot abandon our brothers in Palestine. Therefore, a fund must be created under the Islamic Organization of Islamic Cooperation, be created to ensure the rebuilding of Gaza Strip. We in Turkey will do what it takes to contribute to this fund. We cannot speak of attempts of normalization of relations with Israel in the region without resolving the Palestinian cause. The root cause lies in the lawful rights of the Palestinians, namely the establishment of their independent state on the 1967 borders, the territorial integrity of the land, and East Jerusalem as their capital. We also believe that the International Peace Conference will be a foundation stone to safeguard peace, and to this direction we should continue to exert maximum effort, including a guarantor state, a state that acts as a guarantor for the Palestinians. This, no doubt, will restore peace, security, and welfare, not only to the Palestinians, but all the peoples of the region, including the Israelis. We must be cautious when it comes to safeguarding the holy sites in Jerusalem, as Israel attempts to impose a status quo on Al-Aqsa compound. Many states in the region, including Turkey, here from now and then
the allegations by the Jewish about the promised land. And to them we say, Al-Aqsa Mosque is a red line to us. We hope that Palestine and Jerusalem will restore the glorious past days of security, peace, and welfare, and pray to God Almighty to provide support. And I end by praying to God Almighty to accept in His mercy the fallen martyrs in Palestine, grant speed, recovery to the wounded, and I hope this summit will be a means towards peace, security, and welfare to the Arab and Muslim peoples. And I end by praying to God Almighty to accept in His mercy the fallen martyrs in Palestine, grant speed, recovery to the wounded, and I hope this summit will be a means towards peace, security, and welfare to the Arab and Muslim peoples. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Almighty. Paduka Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, Yang Mulia para pemimpin dan ketua delegasi OKI Forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT OKI dan tepat sekali ini dilakukan, dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. 1 bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia. If you're just joining us on Al Jazeera, it's almost 12:10 GMT, 3:10 p.m. in Riyadh, Saudi Arabia, where the Saudi Crown Prince is hosting an emergency meeting, a joint emergency meeting of the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation to discuss the war and humanitarian crisis in Gaza. Speaking right now is the Indonesian President, Joko Widodo. We've heard from a number of heads of states and governments in this meeting, 57 countries represented at this joint emergency meeting of the OIC and the Arab League. The Saudi Crown Prince in his opening statement saying that we reject the war on Gaza, condemning what he called the brutal war. He called for a cessation of hostilities, of military operations, and a release of the captives. He also blamed the war on Gaza on the UN Security Council. We've also heard from the Egyptian President, Sisi, the Turkish President, Erdogan, and currently we are hearing under threat and under bombardment, and Indonesia must urge everyone to respect the humanitarian laws, and we need as an OIC to ask for taking Israel to the courts and blaming Israel for what it has done against the Palestinians and against Gaza. The committees, the investigation committees must go into the occupied territories, and all the human organizations, human rights organizations must be always there to see what's going on. ICC must play a role in this connection, and the Organization of Islamic Conference will push forward towards peace negotiations in order to find a solution and in order to reach the two-state solution. We cannot accept the one state in this part of the world, and nothing will be on the expenses of the Palestinian people. OIC must go on and must push towards reaching certain dialogues for the sake of the peace. And I'd like to say the OIC must be always united
must use every single and each tool that can push towards the diplomatic efforts in order to achieve justice, bring justice to the Palestinians. From Riyadh, we need to do something, and I will meet the U.S. President Joe Biden in the United States of America, and I will convey to him the message of the OIC. Thank you very much, and peace be upon you all. I'd like to thank President Joker. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر على الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بهذه القمة التي I'd like to thank for hosting this summit that comes at the decisive moment in the history of our region. This summit convenes as our fellow brothers in Gaza Strip